Hello bachcho, let's read question. The question says dependence of spontaneity on temperature. For a process to be spontaneous at constant temperature and pressure, there must be decrease in free energy of the system in the direction of the process. Yani delta G at constant temperature and pressure should be less than 0. Delta G at constant temperature and pressure is equals to 0 implies the equilibrium condition. Delta G at constant temperature and pressure is greater than 0 corresponds to non-spontaneity. Gibbs-Helmholtz equation relates free energy change to the enthalpy and entropy change of the process as delta G at constant temperature and pressure is equals to delta H minus T delta S. Magnitude of delta H does not change much with the change in temperature, but the entropy factor T delta S changes appreciably. Thus, the spontaneity of a process depends very much on temperature. For endothermic process, delta H and delta S are positive. The energy factor, the first factor of equation, opposes spontaneity, whereas entropy factor favors it. Right, at low temperature, the favorable factor T delta S will be small, maybe less than delta H. Delta G will have positive value, indicating non-spontaneity of the process. On raising the temperature, T delta S increases appreciably, and when it exceeds delta H, delta G would become negative and the process would be spontaneous. For an exothermic process, delta H and delta S दोनों ही नेगेटिव होगा, राइट. जो हमारा फर्स्ट फैक्टर होगा वो फेवर करेगा स्पॉन्टेनिटी को, सेकंड फैक्टर अपोज करेगा. एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टी डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच. डेल्टा जी विल हैव पॉजिटिव वैल्यू शोइंग thereby the non-spontaneity of the process. On decreasing the temperature, the factor T delta S decreases rapidly, right? When T delta S is less than delta H, delta G becomes negative and the process occurs spontaneously, right? Thus, an exothermic process may be spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature. Right? Enthalpy change for a certain reaction at 300 Kelvin is minus 15 kilocalories per mole. The entropy change under these conditions is minus 7.2 calorie per Kelvin per mole. The free energy change for the reaction and its spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर विल बी ऑप्शन ए. हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए है माइनस 12.84 किलो कैलोरीज पर मोल. स्पॉन्टेनियस ऑप्शन बी है 12.84 किलो कैलोरीज पर मोल. नॉन स्पॉन्टेनियस ऑप्शन सी है माइनस 17.16 किलो कैलोरीज पर मोल. Spontaneous option B है none of these. The key concept for this question is Gibbs-Helmholtz Gibbs-Helmholtz इक्वेशन. अगर बात करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की तो क्या है, वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. राइट, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है माइनस 15 किलो कैलोरीज. किलो को चेंज करते कैलोरीज में यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा माइनस 15 इंटू 1000 कैलोरीज माइनस टेम्परेचर कितना 300 केल्विन. डेल्टा एस कितना, वो है माइनस 7.2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल. राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा माइनस 15,000 कैलोरीज पर मोल प्लस क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 300. राइट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 2160 कैलोरीज पर मोल. राइट, को फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 12,840 कैलोरीज पर मोल. राइट, डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव आया, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. राइट, अब हमारे पास अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो उसमें किलो कैलोरीज में मेंशन है. ठीक, तो इसको हम लोग को बदलना होगा किलो कैलोरीज में. ठीक है, कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज and 1 calorie is equals to 1 upon
1000 किलो कैलोरीज, राइट। हमारे पास है 12,840 कैलोरीज, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो आ जाएगा आंसर किस में, किलो कैलोरीज पर मोल में, राइट। तो आ जाएगा 12.84 किलो कैलोरीज per mole, right? Coming back to the question, correct answer for this question will be option A, minus 12.84 kilocalories per mole, and the process will be spontaneous क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है, एट डेल्टा जी जब लेस देन जीरो होता है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टानियस, राइट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option A. I hope you understood well. Thank you. All the best.